Hello, welcome back to my YouTube channel. My name is Shivangi Lahoty, aka your designer दीदी और फिलहाल सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ बहुत ठंड है. I am in Rajasthan right now and I decided to film this video for all my kids जो कि अपने 10th और 11th और 12th standards में हैं. Now the ones who are in 10th standards and you have this confusion constantly, right? कि 10th के बाद stream कौन सी लेनी है? How do I start preparing for a career in design? For you, I have a surprise and I don't want you to waste any more time. But just sign up for the free 5-day challenge that I'm doing. I'm doing 2 editions of it. So in this free 5-day challenge, you will get an exact breakdown on how to get started with your careers in design, how to start preparing ahead with actionable plans, with absolute PPTs and PDFs and worksheets to show you how you can get started and to create your master plan. तो आप तो प्लीज़ वो ज्वाइन कर लो. वी आर डूइंग 2 editions of it. We are doing one from 27th February to 2nd of March. No, 3rd of March. And we are doing a second edition as well, which is in April, which is after board examinations, which is 10th of April to 14th of April. Now, no matter आप 11th standard में हो या 10th standard में हो, please make sure that you sign up for this because it's definitely going to be really helpful for you. But for all of my kids who are sort of, at that junction की NIFT हो गया है first round, अब क्या करना है या आई एम ऑलरेडी इन 12th नाउ, अब क्या प्रिपरेशन एक साल में हो सकती है, मैं निकाल पाऊंगी या नहीं, और शुड आई मे बी टेक अ ड्रॉप ईयर, और व्हाट डू आई डू इफ आई डोंट क्रैक निफ्ट दिस ईयर. This is going to be a video addressing all of those questions at the same time. It's going to be a rather chilled out video because हमने वो काफ़ी टाइम से नहीं किया है ना. तो ये थोड़ा सा चिटचाटी सा वीडियो होने वाला है, थोड़ा लंबा होने वाला है, fair disclaimer. But definitely I'll try and answer as many of your questions as I can. And yeah, without wasting any time, थोड़ा सा इस कैमरे को ना सही जगह लगा देते हैं ताकि मैं यूँ हिल के आपसे बात ना करूँ चलते चलते और एक जगह खड़ी हो जाऊँ एंड मेरा भी हाथ कम दुखे. तो चलो शुरू करते हैं. Now, if you're somebody who's already given the exam and you're planning ahead and you want to create multiple options for yourself, one of the first things that I'd like to tell you is consider studying abroad or doing short-term courses abroad if you're taking a gap year for yourself. If you have the budget, if you have the bandwidth, I would personally recommend Indian private colleges में जितना आप खर्चा करते हो आपको बहुत ज़्यादा global exposure मिल जाता है if you actually study abroad in fashion. और किसी stream के लिए I'm not going to be able to recommend this. For engineering, for medical, India is one of the best places to be studying all of that. Even for fashion, we are really good. But I do feel that when it comes to fashion, it's a more global industry and ours is a much younger fashion industry. When you think about it, हमारे first generation of designers अभी अपने 25 साल 30 साल industry में complete कर रहे हैं. While in comparison, when we look at in national designers, they've been there for like 100 years. They're celebrating 100 years, 150 years of being in the industry, which means that it's much more evolved. And if you want to target a global fashion industry, if you want to learn about the global fashion trends and about the global aspect of fashion management and fashion business, I personally recommend studying abroad. Really gives you a very wholesome, holistic approach towards fashion as a career, because what ends up happening is that India to apna hai hi, right? Once you study abroad and come back to India, you can work with the textiles of India, you can uplift the textiles of India, you can work with the different crafts and different cultures that we have in this country, the varied sort of flavors of India. You can help put them together better or have a more sort of growth approach or a more global approach in terms to representing your traditions, your culture and your roots. So I personally feel that if you don't get into an NIFT or an NID, rather than spending like 25-30 lakhs on private colleges in India, जो कि सिर्फ आपकी tuition है, if you go to any of the top private colleges in India, you're spending an easy 25 to 30 lakhs, and उसके अलावा ऊपर equal amount आप consider कर लो on your logistics, on your stay, on your accommodation, your basic fixed resources that you would be required to invest in, whether it's your laptop, your camera, your iPad, your stationery, clothing, fabrics, all of that, right? And
I personally feel that uske badle, if you actually, because that's like 50 to 60 lakh rupees in 4 years, if you go and get like an associate's, like a 2-year associate's degree from a Parsons or something, and then come back to India and kickstart your journey, or go to like a FIT New York and, you know, come back to India, go to one of the, you know, top European fashion schools or UK based fashion schools and do like a short course or a 1-year course and come back to India and then do your undergrad for NIFT or NID. I think that's a much better option. And definitely, I mean, when you look at the maths, it might be a little, when you look at the math, it might be a little more expensive, but at the end of the day, I feel like that global exposure really, really helps. Another thing that you could be considering if you're somebody who's, you know, planning a plan B, is doing diplomas international. In a post-pandemic world, we have the option now to do online diplomas. I have a student at Designer Shala, my online academy, where I had a kid take a drop year, and he prepared for Parsons, did a 1-year diploma on a 75% scholarship, and then got into NIFT, and he's currently studying in NIFT, right? That's another way. And this kid is from Varanasi. Amit, if you're watching this video, super proud of you, kid. And all my bachas, yaar, I'll be very honest, all of you are my bachas, and I want to be very, very, you know, open about this with you कि और options है life में. कई बच्चे होते हैं जो 3 साल 4 साल लगा देते हैं निफ्ट क्रैक करने के लिए और फिर भी नहीं हो पाता है. तो ये एक ऑप्शन डेफिनेटली कंसिडर करो. एंड अगर गैप ईयर लेना है और अगर ड्रीम है कि निफ्टियन ही बनना है, तो प्लीज़ अगले 1 साल खुद को झोंक दो to prepare. And it starts from working on your design thinking skills, and it starts from working on your drawing skills. This is one of the things that you know, we don't focus on enough. I feel हमें लगता है ड्राइंग तो नहीं आती है, अब निफ्टियन कैसे बने. You're too young to be saying that, you know, you're too young to be saying कि ड्राइंग तो नहीं आती है. अगर हमारे पेरेंट्स 60 साल 50 साल की उम्र में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सीख सकते हैं, राइट, एंड दे डोंट से दिस कि यार नहीं आता अब तो कैसे करें. अगर कोविड के बाद हम सब पेटीएम, जीपे, यूपीआई, ये सब हमारे पेरेंट्स की जनरेशन सीख सकती है. आपके पेरेंट्स तो फिर भी यंग है, मेरे पेरेंट्स तो, you know, they're in their 60s now, they're soon touching 60s. तो अगर they can learn it, हमारे दादा दादी सीख रहे हैं यार ये सब. तो definitely age is just a number and your life is just started, right? You're just 17, 18. Don't say this कि मुझे drawing नहीं आती है. नहीं आती है, अभी नहीं आती है, सीख तो सकते हो ना. So work on your skills, invest in the right places and learn. I'm not going to ask you to join me or join Designer Shala कि भाई हम सिखाते हैं definitely. We have NID graduates, we have Niftians teaching, we have some of the best college graduates from best colleges. But बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कोशिश करके खुद से भी सीख सकते हो. तो इन्वेस्ट करो खुद पे. अगर बजट नहीं है तो स्पेंड ऑन योर सेल्फ and spend time on yourself if you don't have money to invest. But do the right thing and don't waste this drop year, because क्या होता है, at the end of the day, a lot of you kids end up thinking कि हम खुद से self study करके drop करके निकाल लेंगे, पर वो discipline नहीं आता है. You need an accountability partner. You need somebody जिसको आप बचपन में जब हम एग्ज़ाम्स देते थे तो हम मम्मी को बोलते थे रिविज़न करा दो, या हम पापा को बोलते थे प्लीज़ रिविज़न करा दो, या आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ लो, आई एम गोना आंसर यू, राइट, एंड इफ़ आई गेट देम राइट मतलब मेरी प्रिपरेशन ढंग से हो गई है. दैट इज़ कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी, दैट इज़ कॉल्ड एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, राइट. यू नीड वन इन योर लाइफ. वी एक्ट दैट फॉर आवर स्टूडेंट्स, वी एक्ट एज वन फॉर आवर स्टूडेंट्स, बट यू विल फाइंड देम, बिकॉज बहुत कम बच्चे होते हैं जो डिसिप्लिन तरीके से 1 साल तक या 2 साल तक बिना डगमगाए, बिना हिले पढ़ सकें. अगर आप वो बच्चा हो तो प्लीज़ कंसिडर दैट एज अ मास्टर स्किल एंड इन्वेस्ट इन योर सेल्फ. थोड़ा सा खुद को टाइम दो, थोड़ा सा रूटीन बनाओ एंड यूटिलाइज दैट गैप ईयर. नाउ मेरे बच्चे जिनका फर्स्ट राउंड हो चुका है एंड यू आर currently thinking कि यार सिचुएशन टेस्ट निकालनी है या स्टूडियो टेस्ट निकालनी है, start practicing playing with paper, start practicing playing with different odd materials. क्ले नहीं है, आटा ले लो घर पे और आटे से चीज़ें बनाओ. यूज़ न्यूज़पेपर्स, रफ पेपर्स,
do various kinds of origami, kirigami, watch YouTube videos, try and learn different kinds of weaves, different kinds of, techniques, create your 3D basic forms, learn how to make your cube, cuboid, pyramids, learn how to sort of work with them and then create multiple 3D models. Start working on your hand skills. सिजर्स ढंग से यूज़ करना आना बहुत ज़रूरी है तुम्हारे सिचुएशन टेस्ट के लिए, टू हैव अ वेरी good command and a strong grasp on your scissors, a hand that doesn't waver and doesn't shake when you're cutting the paper, and when you can make clean strokes with your paper, that shows that you know how to handle your material. Now we are also starting preparations for situation test, or agar aap interested ho, you can wait around. This week we'll be launching our program, which is hamare pichle 2 saal mein we have had like 200-300 kids take up our material studies course. Some of our kids are in NIFT Delhi, NIFT Bombay, NIFT Kolkata right now. The list is endless, very honestly. We have a lot of kids studying in NIFT. 170 बच्चे हैं हमारे 240 में से जो कि पिछले साल NIFT में गए हैं, with just that pre-recorded course on material studies. But this year we are doing something different. हम material studies के course के साथ आपको 10 days of live learning दे रहे हैं, 10 days of a crash course. So if you're interested in that, stick around. We will be opening doors for it soon. We don't want to waste the money of our kids. हम नहीं चाहते कि situation test में होने से पहले ही आप खर्चा कर लो. That's honestly the reason why I don't like cheating my बच्चास and telling them कि भाई पहले से join करो, फिर अगर first round clear ही नहीं हुआ आपका तो क्या करोगे, right? So wait around, but in the meanwhile don't waste time. Work on your skills, work on your scissor holding skills, your paper cutting skills, work on working with different materials, thermocol balls, ice cream sticks, random things that can help you, because you don't know what's going to happen in the exam. You have no idea कि क्या आपको आने वाला है, क्या चीज़ें हैं जो आपको बनाने के लिए दी जा सकती हैं. It's always a googly that they throw at you, so just make sure that you're exploring different materials. और थोड़ा सा दिन में 1 घंटा टाइम निकाल लो, बहुत निकालने की ज़रूरत नहीं है, 1 घंटा टाइम निकाल लो. Another thing that I really want to touch upon is if you're somebody who's giving your 10th boards right now, or ऑनेस्टली ये ना बाकी वाले बच्चे मत देखो, बिकॉज फिर आप दुखी हो जाओगे कि यार हमने तो मिस कर दिया, 1 साल वेस्ट कर दिया. या देख भी लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शायद अब हम कवर अप कर लेंगे. बट किड्स हु आर गिविंग देयर 10th बोर्ड्स राइट नाउ, एंड आफ्टर गिविंग योर 10th बोर्ड्स यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट टू चूज़, व्हाट टू डू विथ योर करियर्स, हाउ टू गो अहेड, हाउ टू प्लान अहेड. प्लीज़ मेक श्योर दैट यू स्टार्ट विद द राइट माइंड सेट, यू स्टार्ट अहेड. 2 साल है आपके पास, तो प्लीज़ वो वेस्ट मत करो ये सोचकर कि अरे अभी तो बोर्ड्स दे दिया, अब मैं 3-4 महीने कुछ काम नहीं करूँगी, अब मैं कुछ पढ़ाई नहीं करूँगा, अभी बस हो गया मेरा, राइट? एवरी मिनट राइट नाउ इज़ क्रूशियल, एंड व्हेन यू लव थिंग्स यू डू, वो क्रूशियल आपको ना बर्डन नहीं लगता है. यू लव आर्ट, यू लव ड्राइंग, यू लव डिज़ाइन, यू वांट टू बी इनटू फैशन, राइट? सो इट शुडंट बी कि अरे अभी तो छुट्टी हो गई. इट शुड मच रादर बी कि अभी तक तो जो बड़ों ने पढ़ाया और जो कॉलेज जो स्कूल वालों ने पढ़ाया मैंने ज़बरदस्ती वो पढ़ लिया. अब टाइम आया है दैट आई गेट टू फोकस ऑन माई सेल्फ, माई करियर, माई ड्रीम्स, माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, माई टॉपिक्स. तो टेक इट इन दिस सेंस कि अभी तो चालू हुआ है कि आई विल फाइनली गेट टू पिक my subjects of choice and study them or work towards them, and make the most of this time. Do not waste your first 3-4 months कि हमें तो chill करना है, कुछ भी नहीं करना है. Invest in sewing classes, invest in illustration classes, learn fashion illustrations, learn draping, learn sewing ड्यूरिंग योर समर ब्रेक्स. कोशिश करो कि 10th के बाद आप ये सारी चीज़ों पे थोड़ा फोकस करो, ताकि आपको एप्टीट्यूड एक तो पता लगे दैट इफ़ यू आर रियली कट आउट फॉर फैशन डिज़ाइनिंग और नॉट. पता लगा बचपन से सोच रहे हो आई वांट टू बी अ ड्रेस डिज़ाइनर, आई वांट टू बी अ फैशन डिज़ाइनर, एंड देन व्हेन यू गेट इनटू निफ्ट यू रियलाइज कि मुझसे नहीं होगा ये. मुझे नहीं करनी सिलाई, मुझे नहीं बनाने कपड़े. आई लाइक स्टाइलिंग बेटर, और आई लाइक द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ डिज़ाइन बेटर. आई एक्चुअली एन्जॉय टेक्सटाइल्स मोर.
So this is your time to explore. You have 2 years to explore different aspects of design, to understand if you like jewelry or textiles or fashion or knits, right? To understand if you even have an aptitude for fashion, or you'd much rather be in product design or animation or graphic design. वो opportunity अभी आपके पास 2 साल की है, तो please उसको optimize करो and explore करो different fields. Now at DCA, which is a sister concern of Designer Shala, at my academy, I make sure that the first entire year is your foundation building year, where you're learning a little bit of textiles, a little bit of graphics, a little bit of logo design, product design, interior design, fashion design, ताकि जब आप second year में जाओ, 12th standard में जाओ, so you have absolute clarity कि आपको क्या choose करना है as a career path for yourself. And अगर absolute नहीं है, तो at least better clarity है, और आपके skills better हो रहे हैं at the same time, because design is very fluid, right? Whether you're learning fashion or you're learning textiles, or you're learning interiors or product, the fundamentals remain the same at the end of the day. And it's just that the medium and the material keeps changing, but design is very, very fluid. So yeah, make sure that 10th के बाद आप टाइम वेस्ट मत करो. अभी तो टाइम आया है कि खुद की पसंद की चीज़ें करनी है, तो प्लीज़ डू दैट. एंड इफ़ यू आर इन 11th ऑल्सो राइट नाउ, यू हैवंट मिस्ड द बस. आई नो मेरे पिछले कुछ वीडियोज़ में बच्चों के कॉमेंट्स आ रहे थे कि दीदी मैं तो 11वीं कंप्लीट कर रहा हूँ, आई एम एंटरिंग 12th, अब क्या बहुत लेट हो गई है, क्या मैं नहीं क्रैक कर पाऊँगी निफ्ट? ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. यू स्टिल नॉट मिस द बस. आई मीन लास्ट ईयर वी हैड किड्स हु टुक आवर 3-month crash course, and like who took our courses for drawing for rookies एकदम last minute, and they still managed to secure like a really good rank with NIFT. They got into like the top 500, top 300 with just a pre-recorded course, with just those 3 months of live learning and practice and those sessions with us. So अगर आप हमारे साथ 2 साल या कहीं पे भी 2 साल लगा रहे हो, या खुद से 2 साल लगा रहे हो, तो डेफिनेटली हो जाएगा. और अगर आप 1 साल भी लगा रहे हो तो डेफिनेटली हो जाएगा. इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बट एक स्ट्रैटेजी होती है जो आपको यूज़ करनी होती है. ऑन माई चैनल आई एम गोना मेक श्योर आई कीप शेयरिंग वीडियोज़ लाइक हाउ आई ऑलवेज डू, बट प्लीज़ मेक श्योर कि थोड़ी सी मेहनत खुद से एक्स्ट्रा करो और थोड़ा सा फोकस्ड होके काम करो. द बस हैज़ नॉट been missed yet. Even if you're in your 12th right now, it has not been missed. अगर आप drop year ले रहे हो तो भी it has not been missed. I mean NIFT ने अब तो आपके लिए age limit भी बढ़ा दी है. So even if you're 24 now, you can sit for NIFT if you're in the general category, which means जो पहले 23 था अब 24 हो गया है, which means अगर आपने BCom भी कर लिया है, BBA भी कर लिया है, आप 21-22 साल के हो तो भी आप NIFT के लिए बैठ सकते हो. 24 साल तक आप बैठ सकते हो. The decision however is with you, how you want to utilize your years and how you want to prepare and how you want to study design. 4 साल की डिग्री करनी है या एक एसोसिएट्स डिग्री करनी है या एक डिप्लोमा करना है, that lies ahead, that lies in your hands, but what lies ahead is a beautiful future in design. और अगर decide कर लिया है that you want to become a fashion designer, you will definitely become it. I have faith in you and I have absolute trust in all my bachas. I know you're gonna make it, and yeah, that's all. I hope ये थोड़ा सा chilled out video है. I know it's rather long, but I hope it calms you down a little and gives you a little understanding. I feel like बहुत time हो गया था कि हमने इस तरह के chit chat sort of chilled out videos नहीं करे थे. माहौल था, सुबह में जल्दी उठ गई थी सबसे, तो I thought बना लिया जाए एक video. And yeah, if you like this video and if you're watching my face for the first time और लगा कि तुम्हारी डिज़ाइनर दीदी थोड़ा हेल्प कर गई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को. लेट्स हिट दैट 100K ऑलरेडी. आई लव यू गाइज एंड all the very, very best, no matter what stage you're in your life. All the very best.